who moved to India during partition days. So we were living in Pakistan before that. एक बार खून लग जाए ना खुद के business हाँ. करने का, then I think there is no going back. Even when we go to restaurants, no, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है ये कितना रेवेन्यू बना लेता होगा, and it's easy to calculate. And I felt if a normal person like him can do it, then हम भी तो नॉर्मली है ना. मेरा कजिन बैठा हुआ था मेरे साथ, वो तब 6th स्टैंडर्ड में होगा. उसने बोला दीदी आप ये क्या डाल रहे हो, आप ये लिखो ना कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स ऑन व्हाट्सएप. द ओनली आई थिंक मेट्रिक व्हिच कैन गाइड यू इफ यू आर डूइंग राइट और नॉट इज आर यू बीइंग सैटिस्फाइड. अगर आपको नींद आ रही है रात को, इसका मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक. Today we have with us Sonakshi Nathani. She is the CEO and co-founder of BIC. BIC is a company which has been continuously ever evolving. She is a fellow IIITian and we are here today to learn from her. Welcome Sonakshi to Take My Breath Away. Thank you so much guys for having me here. It's a pleasure to be speaking with you guys. Thank you so much. Welcome. Awesome. It's like you've been this person that a lot of IIITians look up to, because you have entered this entrepreneurship space right very early, and you've made a name for yourself, right? Before we kind of get into exactly what BIC does and what Manifest does, we kind of want to understand a little bit about your background. You come from a business family and you've always wanted to do business. So tell us a little bit about that. Why did you kind of enter business? Was it, what exactly attracted you towards it? Absolutely. So, like my childhood began, as I like to say it, the first day that I remember of my life, I would say the things that I have listened, heard from my family is business, is about business. And, this comes not just from, first generation, I would say like my parents. It didn't come just from my parents, but from my grandfather who moved to India during partition days. So we were living in Pakistan before that, and they used to own a stationery ka store over there, my grandfather's dad. And during partition, they had to move here, unfortunately or fortunately, and he was in 10th grade and completing his own studies, doing a part-time job to fund that, and also supporting his family, like brothers and the remaining sisters as well. So वो उनका काम था, and he did that with a lot of passion. And once that was done, he took up a government job. But back of his mind, he was always कि मुझे खुद का business शुरू करना ही है, just like how it was back there in Pakistan. And at the age of 50, when my dad was in his engineering college, my dad told my grandfather कि मुझे real estate का काम करना है college खत्म होने के बाद. And it was just 2 years left for my grandfather's date of getting retired and getting, a permanent pension. But he took a leap of faith. He quit his government job and it was in irrigation department, and started his own company, which was a cement pipe business. That worked really well, decently well for around 6 to 7 years, profitable and serving the family, etc., etc. But then, and this was, I believe it was somewhere around 1975 already. Yeah, and that's when, 7 saal ho gaye the. And my grandfather, along with my, my dad and other, chachu and bua, etc., was traveling to Kashmir for a small holiday, a train mein. And that's where, he met one of some random person. And he said कि वो तो मुझे टिकट नहीं मिली फ्लाइट की, that's why I'm in train, etc., etc. So my दादाजी overheard things कि भाई ये इतना पैसा कैसे इनके पास कि ये फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं. And it was 1975 back then. Yeah. So he asked them कि आप करते क्या हैं, मतलब कि आपके लिए फ्लाइट वगैरह का खर्चा निकल जाता है. He said मैं बिल्डर हूँ, मैं रियल एस्टेट का काम है. That's when my दादाजी understood कि अच्छा ठीक है, सीमेंट पाइप की फैक्ट्री तो बना ली, but अब मुझे भी रियल एस्टेट का काम करना है, बिल्डर बनना है. So that's how he started buying plots, etc., and entered into this venture. And since then we haven't looked back, and things have grown in the family. But I saw that phase. So from I have
I came to this Hmm. into this world in 93. So मैंने वो phase देखा, growth phase देखा, from early stage, like we see startups from seed to early to growth and then IPO kind of thing. तो मैंने वो stage देखा है when we saw things which were nothing to things that became something. So that gave me certain inspiration कि दादाजी कर सकते हैं, पापा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. एंड दिस डिडंट कम अपने आप से, केम फ्रॉम फैमिली. सब जब भी कुछ भी Hmm. पूछो पापा से, तो पापा यूज्ड टू से कि अरे खुद का करना है ना, भले छोटा करेंगे बट खुद का करेंगे. इनफैक्ट Hmm. पढ़ते वक्त भी, इवन डूइंग 11th 12th का स्टडीज, देयर वाज अ डिलेमा, कोटा जाना चाहिए क्या, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस कॉल्ड रायपुर. तो वहाँ Hmm. एजुकेशन उतनी होती नहीं थी. तो अच्छा. डिस्कशन था दैट शुड बी गो आउट एंड स्टडी. पापा ने वही बोला, खुद का ही करना है ना बिजनेस, तो क्यों इतनी लोड भी लेनी, आराम करो 2 साल. 2 साल ही थे आखिरी घर पर. सो माइंडसेट हमेशा ऐसा था कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट. एंड that Yeah. I think maybe that's why it resulted into being an entrepreneur. No, this is actually quite quirky, because basically लोग courses पे जाते हैं to understand the life cycle of a business. आपका मतलब बचपन से हाँ. basic best kind of learning, right? घर Yeah, पे एकदम. absolutely. सारे ups and downs देखे, downs काफी सारे देखे, but coming together as a family and facing it was one thing that I learned. A lot of people in the north, this is a little bit on a tangent, but a lot of people in the north, they have a partition story, जो काफी emotional होता है, and all of that. Unfortunately, people in the south, I mean, unfortunately or fortunately, we don't have that kind of a story. Mm. One thing though that I kind of want to share is that my father, he often tells me this thing कि he and his uh, like his father and a lot of their ancestors, they actually had gone to Sri Lanka and they set up a hotel over there. So he has Oh. this thing where it was a restaurant. It was basically a restaurant where and it ended up closing because of a lot of mismanagement. They didn't trust the person who was the cashier, and that person embezzled some money and things like that, and they eventually came back to India. So he also has this thing where he's like essentially he's kind of started his own thing right now. He's close to 58 or so. So I'm kind of relating to a lot of things that you're saying, although it's a little bit different. Yeah. uh, एक बार खून लग जाए ना खुद के बिजनेस हाँ. करने का, then I Hmm. think there is no going back. Nice, nice. तो True. इसका actually तो this gives us a very nice segue, right? Because आपने अभी कहा जैसे कोटा जाना है कि नहीं, and there's always no pressure from the family as such. Yeah, But yeah. then so straight out of college, so you joined IIIT and then Hmm. you joined Microsoft out of that, right? So Yeah. what made you go down the beaten path instead? Why a big company? I'll give you a bit background on that as well. So joining IIIT was also not something that I ever wanted. मुझे civil engineering करनी थी, for अच्छा. obvious reasons. Family Hmm. Right. का real estate Right. business था. एंड फिर पर कंप्यूटर रैंक आ गई, जिसमें कंप्यूटर साइंस मिल रहा था IIIT में, तो बहुत ल्यूक्रेटिव हो जाता है. एंड ऑल्सो दिस अ पुश फ्रॉम सोसाइटी की कर लो. Right. सो अगेन Hmm. आई वेंट बैक टू माई फादर, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ही हमेशा सही बोलते हो. सो ही केप्ट सेइंग जो आपका मन हो वही करो एक्सेट्रा. बट इन द एंड, टुवर्ड्स द एंड, ही सेड वन थिंग व्हिच वाज, बेटा देखो ये रियल एस्टेट का बिजनेस तो हमको चलाने आता ही है, क्या पता हम टेक कंपनी भी बना ले खुद की, फैमिली की, Hmm. तो कंप्यूटर साइंस पढ़ लेते हैं, वहां से भी बन जाएगा. सो दैट्स हाउ मैं बोला चलो ठीक है, बढ़िया, वैसे भी टाइम पास करने के दिन है, चलो जाते हैं Hmm. करने. Hmm. सो दैट्स हाउ IIIT हैपेंड टू मी. एंड देन IIIT में भी ऐसा था कि आई एम हियर टू हैव फन. मेरे को कोई Hmm. गोल नहीं है जो बाकी सब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक में जॉब लगानी है, मेरा वैसा कोई गोल नहीं है. सो फर्स्ट ईयर में आई लिटरली हैड लॉट ऑफ फन, बट देन मेरे डी ग्रेड आने लग गए. एंड दैट्स व्हेन प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग इन की सब मेहनत Right. Hmm. कर रहे हैं, सबको इंटर्नशिप अच्छी चाहिए, सबको प्लेसमेंट अच्छी चाहिए, तो व्हाई नॉट मी, मैं भी ये टाइम पास क्यों कर रही हूँ, मैं भी कुछ कर लूँ. सो दैट्स हाउ आई केप्ट अ गोल इन माइंड कि अब मुझे डे जीरो प्लेसमेंट ही चाहिए. मतलब अब Hmm. अगर मैं यहाँ तक आई हूँ, सो आई एम इक्विवेलेंट टू अदर पीपल हियर, तो चलो मेरे को भी Hmm. अब डे जीरो चाहिए. अब मैं बस खुद की लाइक फॉर दैट ईगो आई वांटेड दैट, एंड दैट हैपेंड. Hmm. माइक्रोसॉफ्ट में हुआ ऑन द डे जीरो प्लेसमेंट, बट वो बस एक जिद थी, मेरा कोई गोल नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए एक्सेट्रा. एंड देन माइक्रोसॉफ्ट में 1 year was super amazing. I would say I used to learn small things कि वो लोग कैसे कैंटीन का मैनेजमेंट चला रहे हैं, कैसे उन लोग ने Hmm. एक गोल्डन स्टार
जो उनका वेंडर था, who used to put Hmm. in fresh fruits every day at 5 p.m, every day at 10 a.m Yes. and keep it Yes. so fresh. ये करते कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, कैसे वेंडर ढूंढते हैं, टैक्सी मूविंग सिंह कैसे उन्होंने पूरा सब Correct. कुछ Correct. define किया. That is what I started to learn beyond doing those normal sprint tasks. So मुझे तो बहुत मजा आया, but then eventually calling तो है ही to start your own company. So 2 years down the line I started realizing. So even last year of Microsoft was more of the कब छोड़ना है etc. Hmm. So then took a leap of faith, quit my job and started this. भी क्या कुछ था नहीं start करने के लिए. I was empty handed. My co-founder Ashu, he was batchmate in IIIT. So IIIT days से था कि साथ में business करेंगे. So वो mindset Hmm. था ही. Hmm. So I somehow convinced him to move back. He was in Canada back then. So वो वापस आ अच्छा. गया. And that's how we started. We started something, कुछ बनाने लगे, but on the way we figured things out and कुछ हो गया. Nice. Right. Nice. एक चीज जो आप constantly I'm seeing this thing कि everything, whether it's you or your family, you always look at it from this lens of a business person कि ये कैसे चलाते हैं, Yeah. यहाँ इसकी sourcing कैसे, Hmm. how does it happen and so on and so forth. Yes. जो काफ़ी fascinating है, like most of us at least, and your background is so relevant to it also, है ना. So for us who are coming from families where our fathers have been in like government jobs and so on, our conditioning is very different. Our conditioning is security, and for you it's like इसमें opportunity है, उसमें opportunity है, and you're really trying to understand and dissect the world. तो वो बहुत fascinating लग रहा है मुझे, and it's amazing. Even when Yeah. we go to restaurants, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है ये कितना रेवेन्यू बना लेता हो. And it's easy to calculate. After a time, Right. आपके पास Right. बहुत easy तरीके होते हैं calculate करने. Correct. Estimation का, right? Yeah, हाँ. even actually this is something जो आप बोल रहे हो ना, even the things जैसे the things that fascinated me also, that even the fruit vendor, something as simple as that, कि आपके groceries कैसे आते हैं, right, on a regular basis. If you think Correct. about it, पूरे logistics, and Yes. these things started striking me once I started getting into जैसे काम, normal काम तो चलता रहता है, but I started volunteering for ये टीम के इवेंट्स के लिए मतलब ऑर्गेनाइज करना एंड ऑल, एंड ओवर टाइम दैट केप्ट ग्रोइंग इन साइज, एंड देन यू रियलाइज दीज नुआंसेस, राइट, कि बैकग्राउंड में कितना क्या क्या चल रहा है, द लेंस ऑफ वो वाला, इट्स रियली फन. Microsoft in fact gave me a way to set up lot of things here at Big. मतलब जैसे for example लोग randomly छुट्टियां मांगते हैं, या holiday calendar, या फिर कोई लैपटॉप तोड़ के आ गया है तो लैपटॉप पॉलिसीज, small things that has helped us a lot. Yeah. Actually, that is something that I was going to touch upon. Basically, a place like probably Microsoft, where it differs from a small company, would be like maybe it teaches you that how things are built for scale, or maybe Exactly. something for the enterprise world, right? These nuances. Absolutely. Once you're beyond seed stage, then it's about scaling up. And it is very similar to how it is done in any MNC or corporate. So yeah, it definitely helps. Yeah. So did you feel like this stuff that you kind of did at Microsoft, at least क्या वो skills transferable हैं? And like was there something like, essentially you are coming from a very structured environment. Let's remove your like background, real estate and all of that. तो वहाँ से if you're starting out a company, there must be a lot of things that you would have had to like learn, relearn, and even certain practices perhaps which are right for Microsoft might not have been right for your company. So do you have something on that you can share with us on this? Definitely. So few things, and जो daily basis में होता है. So my co-founder Ashu, he was working at Square before starting this company. तो वो बहुत unstructured environment हो गया, startup है वो. अच्छा. Versus Microsoft बहुत structured है. So let's say when we started our journey at Big, ऐसा था कि how do we structure, let's say, shipping our products? It should be sprint, 15-day sprint. Should we do daily syncs? हमारे there is everything has a structure at Microsoft. Even team outings का भी structure होता था कि quarterly कुछ morale budget होता है, उसके basis में जाते हैं. Versus if someone comes from an unstructured background, फंडिंग आई है यार, मन कर रहा है चलो सारे एम्प्लॉयज के साथ समोसा चाय की पार्टी करते हैं, एक्सेट्रा. सो आई फेल्ट कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करना सही था. एटलीस्ट आई कुड पिक दो स्ट्रक्चर्स फ्रॉम देयर.
And the other part I felt was, in a way, I also felt कि maybe मैंने बहुत slow move किया in initial 3 years. I could have leveraged that for my startup क्योंकि हर दिन आप यहाँ नया सीखते हो versus Microsoft में it was a very slow journey in terms of Right. learning. But at the same time, I also feel कि slow था तो क्या हुआ? At least my urge of traveling the world हुआ तब. Otherwise Right. मुझे हमेशा लगता रहता कि all my 20s went into doing startup stuff. मैंने नहीं Right. travel किया etc. So in a way balance out हो गया. But yeah, I could have kick-started अभी, like for example, I'm already 29. मैं अभी 26 की होती, मेरे पास 3 साल और होते Right. to have fun. So yeah, it is pros and cons तो है ही for everything. Right. Right. Career ko we should never take it in isolation. Whatever is happening in Yeah. your personal life and your other ambitions, all of that also plays a huge Yes. context. Yeah. So makes sense. Like you got that time to enjoy and really Yes. explore the world and whatnot. One thing which is kind of hitting me is you come from a structured like essentially you're coming from Microsoft and your co-founder is coming from an Yeah. unstructured background. I was going to So ask आप about दोनों that. के बीच में how is that like synergy and how did you kind of work out what is the right way? And the reason I'm Yeah. asking this is oftentimes my whole background is all in startups and Debayan's whole background is Microsoft primarily. So anytime we have a conversation, it's often ki this is better or that is better or we are always at crossroads. So how did you guys kind of navigate this? Yeah. Yeah. So initially कैसा हुआ कि structure जहाँ पे डालना होता था discipline. So for example, putting up HR policies or putting up a structure की sprint ऐसे ही plan होगी, वो सब मैंने pick up कर लिया. Versus Ashu was more like कि getting things done. मतलब अगर ये हमें achieve करना है in terms of product shipment, वो करके देगा. So ऐसे से धीरे धीरे चलता रहा. It was initial 7-8 months of building. Our first product was Bikai, which we built. So 7-8 months वैसा ही चला, and there was no plan of raising any venture capital. But Y Combinator happened. So Y Combinator taught us कि आप में से एक को CEO बनना पड़ेगा. ऐसा थोड़ी ना होगा कि दोनों CEO, like who would do the fundraise? That CEO Right. job. So that's when we took a decision that I'll take that responsibility. Because of obvious reasons. He was really good in tech, in coding part, etc., getting things done as fast as possible. Versus I was really good at communicating, storytelling, setting up structures, sales, etc. So I took up the CEO Right. role. So जब YC ने बताया कि ऐसे आप सोचो and ऐसे structure करो, that's how things started happening. Yeah, So have you kind of become more unstructured or has he become more structured? Both ways. मैं भी बहुत unstructured हो चुकी हूँ. There is no understanding और count of कि हम actually में क्या काम करते हैं. सोचते कुछ और है, होता कुछ और है. But हाँ यार, efforts तो लगते हैं कुछ कुछ करने में. This is actually हाँ ये मुझे वही याद दिला रहा है because many times I think जैसे आप बोल रहे थे like many people will have that खुद में कि I want to start something of my own but Yeah. the thing that might stop them from trying it out is probably the safe space that they have in ये वाले ना the big companies में for Yeah. instance any company for instance even सरकारी Yes. नौकरी में भी Yes. so जब आप ये when you left it when you were trying to build your own startup right did you have this in the back of your mind that this is like a safety net I'll come back maybe I give myself this time if I have something by then yes otherwise I can always Yeah. return to it. So इसकी भी interesting story है. So I went to put down my papers around May. अभी भी मुझे याद है. May 2018 was that was the first time I went to my manager to put down my papers. But manager था नहीं. And how I was training my mind, मुझे पता था कि मेरा mind मुझे fool करता रहेगा to not leave. हमेशा बताएगा ये lucrative options हैं. Yep. So I started reading a lot of books. Like Nike की तब Shoe Dog निकली थी. Upstarts आई थी जिसमें Airbnb वगैरह की स्टोरी थी. तो every day I made sure कि मैं Microsoft 12 बजे के पहले नहीं जाऊंगी. मैं बुक पढ़ के ही जाऊंगी and शाम को भी मैं बुक आके पढ़ूंगी. मुझे किसी से interact because the more you interact with people who are part of Microsoft community, the more you'll feel यार यहाँ पे life बड़ी अच्छी है. So that was one thing I started moving out of and books पढ़ने लगी मैं बहुत ज़्यादा. And then first week of May था I went to put down my papers but उस दिन manager छुट्टी ले लिया. 2-3 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया था. उस दिन उसने छुट्टी ले ली.
So I couldn't put, and then फिर lunch करने जाओ, snacks करने जाओ लोगों के साथ, then mind change हो जाता है, then मैंने नहीं किया, मैंने paper नहीं put किया. Then जून में when my parents were out for some trip in Germany, वो नहीं थे इंडिया में, एंड उनसे भी प्रेशर आता था, बेटा अभी मत छोड़, बाद में देखेंगे, अभी मस्त लाइफ है एक्सेट्रा. सो स्पेशली फ्रॉम माय मॉम. तब मैंने सोचा चलो अच्छा बहाना है, कॉलिंग तो लग नहीं रही, उनके पास नंबर नहीं था वहां पे जर्मनी हम्म में. सो आई हैड पुट डाउन माय पेपर्स, आई जस्ट कॉल्ड अप माय ब्रदर की हो गया, मतलब मैंने डाल दिया मैंने पेपर, अब बस यही है. तो बोला हाँ तू चिंता मत कर, मम्मी पापा वापस भी आएंगे तो वील कन्वे. बट वेन मेरे भाई ने उनको तभी बता दिया था जब वो जर्मनी में ही थे. एंड अच्छा देन दे डिड अ व्हाट्सएप कॉल एंड दे सेड कि अभी तो बेटा जर्नी शुरू हुई है, इट्स गोइंग टू बी टू मच फन एंड वी आर गोइंग टू विन दिस. दैट इज व्हाट दे सेड. सो आई फेल्ट रियली गुड आफ्टर दैट दे सपोर्टेड मी. बट हाँ, बहुत ज्यादा था माइंड में प्रोक्रेस्टिनेशन, बट समहाउ वी डिड इट. एंड देन आई इन्फॉर्म्ड आशु कि मैंने पेपर डाल दिए हैं, तू भी जल्दी इंडिया आ जा whenever you feel is the हम्म right time. And that convinced him so much that मेरा notice period खत्म भी नहीं हुआ था वहां पे, उसने भी resignation डाल दिया. And before my days at Microsoft could get completed, he was already in India, in Hyderabad, with me to get started on the journey. So कुछ तो हुआ, everyone got convinced. Maybe the universe wanted us to do that, but yeah, things Actually, happen. this is something that I have a follow-up question to this, because इस केस में एक तो one was the dichotomy of things, right? जैसे आपके पेरेंट्स आप बता रहे हो, like एक आपके पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं पहले से, एंड देन Yeah, बट मम्मी yeah. के साइड से there's this कि नहीं है बेटा, हाँ. अभी तो कंफर्टेबल जॉब में हम्म. अभी स्टार्ट किया है, इसको मत हाँ. छोड़ो. तो हम्म. ये like how did this balance out, or was there always this feeling that no, I mean that realization that I will have to do this. I'm confident in my skills, and this is something that mattered more to me, the satisfaction, यस, rather यस, than. यस. या इट वाज मोर ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब ऐसा था कि दुनिया कुछ भी बोले, Hmm. हमको पता है हम कर सकते हैं. एंड द ओनली वे टू गेट दैट कॉन्फिडेंस इज व्हेन यू स्टार्ट हियरिंग मोर फ्रॉम अदर फाउंडर्स. फॉर एग्जांपल, आई स्टिल रिमेम्बर रेजिग्नेशन की 2 घंटे पहले हेडफोन लगाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैं खुद बुक माई शो के फाउंडर का स्पीच सुन रही थी. एंड ही वाज सेइंग कि वो जिम्बाब्वे में थे एंड कुछ कुछ उन्होंने वहां देखा, सेम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, एंड दैट्स हाउ ही वांटेड टू स्टार्ट इट. एंड आई फेल्ट इफ अ नॉर्मल पर्सन लाइक हिम कैन डू इट, देन हम भी तो नॉर्मली है ना. मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या, 10% गधे होंगे उनसे, 20% गधे होंगे, हो सकता है अच्छे भी हो 10%, और वो तो Hmm. ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा. तो इफ ही कैन डू इट, व्हाई कांट वी? सो बस वही है. मतलब व्हेन यू कीप लिसनिंग टू पीपल, यू विल रियलाइज दैट पीपल हु हैव डन रियली गुड आर आल्सो नॉर्मल. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही एक्सेप्शनली वेल हैं. सो दैट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड एक्चुअली माइंडसेट है, यू जस्ट हैव टू ट्रेन योर माइंड की कर लोगे. So does something like having a safety net of sorts here, right? Because your family already had a business. Does that play a role here? Say for someone who's. या फिर हो even like a सकता है. financial safety net, does that Hmm. also make a difference? You had Yes, worked for yes. 3 years and so on. Yeah, so even today, I don't draw any salary from the company. So I'm still living with my 5-year-old car. And Hmm. जितना कंजूस हो सकूं मैं उतनी ही हूँ, इवन मोर कंजूस देन जो मैं कॉलेज में थी. सो बट हाँ, मतलब बैक ऑफ माइंड में डेफिनेटली हमेशा रहता है कि अगर मान लो वर्स्ट केस भी हुआ कि मेरे पास कल को खाने के पैसे भी नहीं रहे, so there's family who can support it. So I wouldn't deny this Hmm. support. So definitely है. In fact, my mom kept sending weekly ration to me through Big Basket every week जब तक हमने fundraise नहीं So किया था. sweet. या Hmm. फ्रूट्स, Yeah. वेजिटेबल, लाइक एवरीथिंग शी वाज सेंडिंग. तो एक तरीके से वो फंडिंग ही चल रही थी खाने पीने की. बट या यार, अगर वो नहीं भी होता ना, देन ऑल्सो आई वुड हैव टेकन दिस स्टेप. क्योंकि Hmm. नहीं तो लाइफ में क्या है, मतलब वर्स्ट केस क्या Hmm. होगा, आप दोस्तों को बोलोगे यार खिला दे आज, या और वर्स्ट केस मतलब आप जाके जॉब ले लोगे वापस. और तो क्या Hmm. ही हो सकता है, उससे वर्स्ट तो हो ही नहीं सकता. एंड इन Hmm. दिस इंटरनेट वर्ल्ड तो आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, आप कितना कुछ कर सकते हो. तो हमेशा वो ट्रेन करते रहती थी मैं माइंड में. बट आई वुड नॉट डिनाई द फैक्ट दैट फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से इट वाज लिटिल इजी. यस. Hmm. नहीं, Family is this makes yeah, sense. extremely important.
Like Yeah. having entrepreneurship की journey already challenging होती है. If Yeah. you have to fight another battle along with that, तो Yeah. it becomes 10x of that. Absolutely. एक चीज जो आपने बोली थी, that was no, I think I'll one go thing ahead which if you go ahead, you go ahead. No, I was just thinking that ये अपने मतलब this is something that definitely makes sense, right? Especially one thing जो funny था was I think the part about कि worst case like getting a job back is rank lower than कि दोस्त के यहाँ पे जाके बोलो कि खिला दे. That is fun. But I was just thinking कि आप अगर मान लीजिए if there is someone right who might not be thinking about these safety nets, right? What advice would you give to them for like to understand this the sort of the entrepreneur world basically to get Yeah. one thing that you mentioned was just listening to the stories of earlier Yeah. founders, right? That is Yeah. one. And is there any other like avenue, like maybe say attending some events or getting to some trips that you followed to understand कि this space is something that makes sense and this is where I should channel my efforts? ऐसा Yes. कुछ. Yes. सो इसमें ना एक दो चीजें हैं. एक तो आप ये करो कि फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में आराम से महीने का 20,000 या 15,000 खर्चे में भी निकाल सकते हो. आप 8,000 रुपए रेंट दोगे, बाकी सब अपने खाने पीने में खर्चा करोगे. सो 15,000 पर मंथ में अगर आपकी लाइफ चल सकती है, तो मेक श्योर व्हेन यू आर क्विटिंग आपके पास 2 साल का वैसा रनवे हो. 2 साल इंटू 15,000 की मान लो कुछ भी रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है, तो भी यू आर एबल टू ईट फूड. दैट इज वॉट यू वॉन्ट, राइट? तो अगर सेफ्टी नेट नहीं भी है, 15,000 रुपए पर मंथ इंटू 24 कर जमा कर लो, एंड विच आई फील इज वेरी इजी. वो कर सकते हैं हर कोई. तो वो आपका सेफ्टी नेट बन गया. एंड दूसरी चीज तो मुझे लगती है कि यू हैव टू फूल योर माइंड. अगर वो इवेंट से हो रहा है, ट्रैवल से हो रहा है, या फैमिली से बात करके हो रहा है, ऐसी फैमिली जो आपको हमेशा यू नो एक ऐसे स्टेज पे रखती है कि आप ही बेस्ट हो इन दी वर्ल्ड, तो आप बस उन्हीं से बात करो. आप किसी और से बात ही मत करो until your mind jumps onto the other side of the road. तब तक आप किसी और से, अगर आप ऐसे लोगों से एडवाइस लेने जाओगे ना जो बहुत ही वो नहीं होते कुछ ऐसे टाइप के लोग जो Pessimistic. सो हाँ जाने गए तो हाँ उलझा दिया. कि हाँ हाँ वही, लाइक बहुत ही टेक्निकली साउंड करते हैं and बहुत ज्ञानी साउंड करते हैं. they'll tell pros and cons, they'll tell you hundreds of failures, they'll tell कि न्यूज में एक सक्सेस आती है पर उसके पीछे 1,000 फेलियर्स होते हैं. उन सब के प्लीज मत जाना, क्योंकि अगर आप वो सुनते रह जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है. एंड just keep reading about really successful stories like Elon Musk हो गया, या just really successful, because in the end you have to pull your mind, and this is not just one time job. You have to do that every day as an entrepreneur, because every day is a challenge. You have to make that move, another set of step in your life. So every day you have to pull yourself and get to another stage. Yeah. So No, I loved how you put it because so there's a mix of this idealism and with a healthy dose of realism also, right? Like that thing that definitely be inspired by the journey of people that this is what yeah, is possible, but yeah, also definitely make sure that you have that runway, at least the 2 साल वाला जो आप बोल रहे थे. वो होना That's जरूरी है. yeah, that because Yeah, many times you see people getting stuck in either of the extremes, right? या तो हमेशा you keep building the safety net, or you are so idealistic that you end up doing random things yeah, just in the name of passion. yeah. And this is yeah. डायरेक्शन होना भी बहुत जरूरी है. लाइक पीपल थिंक कि ट्विटर पे फॉलोइंग बनाने से एक एंटरप्रेन्योर बनना आसान हो जाता है, विच इज नॉट ट्रू. In the end, entrepreneurship is building a product or building a content which is adding lot of value to people's life. So वो ही entrepreneurship है. But लोग भटक जाते हैं. That also happens quite a lot. Like fan following बढ़ाना on Twitter, LinkedIn, which is very easy. मतलब अगर आप देखो LinkedIn पे खुद की फोटो ही डाल दो, 200 लाइक्स आ जाएंगे, 300, पर करोगे क्या उसका? मतलब व्हाट्स द पॉइंट? सो यू हैव टू Right. आल्सो पिक अ मिशन कि आपको क्यों आपने किया है. देयर शुड बी अ व्हाई टू योर मिशन, एंड दैट इज व्हाट यू शुड फॉलो. Yeah, this is actually Makes a very sense. nice segue, completely unscripted, but very nice segue into like how did you decide to start Bikai, your startup, right? Tell us a little bit more Yes. about that. Yes. So again, coming back to my family's journey. So we also run a store in Raipur, and grocery store hai.
एंड उनको मैंने देखा, मतलब वो बेचते थे सामान एक्सेट्रा, एंड दैट्स वेयर द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम कि इनका ऑनलाइन स्टोर क्यों नहीं है. एंड बैक देन आई हैड नो क्लू अबाउट कि already there are massive big IPO'd companies who are online store builders, you know, they're वो $40 billion की कंपनी है, and वो सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाती है. बट आई नेवर थॉट अबाउट इट. मेरे को ये बस लगा कि इफ आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर माई फैमिली, मैं ऐसे हजारों करोड़ों बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ थ्रू माई प्रोडक्ट. सो वी स्टार्टेड बिकाई. इट्स एन ऑनलाइन स्टोर बिल्डर, and that's how journey started. And for us, you know, COVID was in some way blessing in disguise, because now every business wanted to go online, and it was just 6 months down the line when we had introduced Pikai to the world. So very right timings, and that's when we got into Y Combinator as well. So, you know, understanding about how to scale up your startup, how to raise funds, etc. आने लगा दिमाग में. And बस वहां से जर्नी शुरू हुई. We kept building Bikai, and yeah, and mission was to help businesses like my families, you know, make them successful. That became our mission. So things became very easy. मतलब जैसे पहली चीज जब स्केल आया तो we didn't have customer support guys, so हम खुद 5-5 6-6 घंटे कॉल पे कस्टमर सपोर्ट करते थे, मैं और आशु. Then we hired first set of 3 people who were customer support executive. We didn't hire tech intern, we didn't hire any product manager, etc. It was customer support executive. So that's how journey very, very, you know, organically started. The real world we started seeing later when, you know, things started becoming big, and understanding की market कितना बड़ा है, TAM क्या होता है, मेट्रिक्स क्या होते हैं, MRR क्या होता है, ARR क्या, ये सब कुछ नहीं पता था. हम बस रेवेन्यू जनरेट करते थे खुद का, उसी से ही सैलरी देते थे और उसी से ही चलाते थे. इस Yeah, so पूरे first of जर्नी में लाइक यू सेड राइट, यू डिडंट नो एनी ऑफ दीज टर्म्स. या और ये जो मार्केट है एसेंशियली इट वाज कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और विच इज एसेंशियली योर फैमिली, एंड देन यू एक्सटेंड बेस्ड ऑन दैट. तो इसमें या were there some mentors that you kind of had to rely on, or some people that you luckily found due to which your path became easier? I would say yes and no. So initial 8 to 9 months कोई mentor नहीं था. The only mentoring was coming through our customers. जिनका भी कॉल आता था, जो भी ऐप इंस्टॉल करते थे, वो फीडबैक्स देते थे, अप्रिसिएशन देते थे, दैट हाउ मच, यू नो, आवर प्रोडक्ट इज हेल्पिंग देम. ऐसे ऐसे बनाओ, रोड मैप अपने आप बनता था. हमेशा एक एंथू होता था कि, यू नो, ये जल्दी से फिक्स करना है, जल्दी से फीचर बनाना है, सो दैट. So the only thing that we were blessed was कि customers input आ रहा था Input आ रहा हमेशा है. से. ऐसा नहीं हम सोच रहे किसको बेचें, कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, वो प्रॉब्लम नहीं थी बिकाई में. सो कस्टमर्स हमेशा आते थे. बट यू नो, एंड देन वी टर्न प्रॉफिटेबल ऑल्सो. मतलब महीने का उतना आने लगा जितना खर्चा था. बट देन, यू नो, वाईसी का पढ़ा मैंने ऑनलाइन, एंड फिगर्ड कि ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है फॉर अस. बट चांस कम था. आई स्पोक विद आशु ऑल्सो कि यार करना चाहिए क्या. ही सेड बहुत मुश्किल से होता है, छोड़ देते हैं, अभी अपन इसी पे फोकस करते हैं. आई टोल्ड हिम फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, मेरे तो 5 मिनट लगते हैं. तो फॉर्म भरा था, एंड दैट्स हाउ वी गॉट इनटू, एंड थिंग्स चेंज्ड. मतलब वहां से जो मेंटोरशिप मिली, वहां से वैल्यू ऑफ हैविंग अ मेंटोर इन योर लाइफ, यू नो, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग. सो थोड़ा स्ट्रक्चर आ जाता है, बट उसके अलावा तो इट्स योर इंडिविजुअल जर्नी दैट यू हैव टू कैरी. Yeah, Makes this is sense. something actually, Joe, matlab, one thing that is this of course resonates with that part, right? Like principles on which many successful organizations are based on the customer. There's Amazon, for instance, right? That customer is key, Customer like first. customer, bhagwan hai. Like you keep listening to them, you keep solving Yeah, problems, and then yeah. automatically you'll see adoption. Now, I have one question here that I'm curious about this. जैसे आप बता रहे थे कि you don't have the problem of feedback because you always kept having customers, right? Yeah, So how did you embark on that journey, especially given that this is something which is online and yeah, net access is something which is necessary to even know about this, right? So was it yeah, relying on word of mouth, or how were you getting people to know about yeah. your business? Yeah, so Yeah. since again, you know, keen on understanding businesses चलते कैसे हैं, क्या होता है, तो Facebook तब थोड़ा बहुत चलता था. It was back in 2018, 2019.
तो जितने भी मतलब फेसबुक ग्रुप्स थे ऑफ रिटेलर्स, होलसेलर्स एक्सेट्रा, वो सब मैंने ज्वाइन कर लिए थे देखने के लिए कि बिजनेस चल कैसे रहे हैं। मुझे फीड्स में आता था क्योंकि सो आई रियलाइज्ड कि ये लोग सब फेसबुक ग्रुप में बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डाल देते हैं वहां पर एज अ पोस्ट, एंड देन कोई कमेंट करता है तो परचेज कर लेते हैं। तो जब बिकाई बना रहे थे फॉर माई फैमिली, आई न्यू कि सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, ये जो इतने हजारों करोड़ों बिजनेस एडेड है, सब लेंगे मेरा प्रोडक्ट। सो व्हेन द प्रोडक्ट वाज रेडी, हमने उन ग्रुप्स में पोस्ट करना शुरू किया अपना ऐप का लिंक, एंड आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट इंस्टॉल केम फ्रॉम अ पर्सन कॉल्ड निधि मेहता। एंड उस टाइम तो उसने फ्री में लिया क्योंकि हमारा पेड वर्जन था नहीं फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स, बट व्हेन आवर पेड वर्जन वाज लॉन्च्ड उसने पेड भी खरीदा। 199 रुपीज का पेड था। सो दैट्स हाउ यू नो लाइक अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो बना रही हूँ प्रोडक्ट वो किस टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, and वो मेरे को फ्री में कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि शुरू में आप पैसे नहीं खर्च कर Yeah. सकते हो। एंड देन यू नो काफी फ्रेंड्स फेसबुक में थे तब, एंड फेसबुक हैड दिस पॉलिसी कि एवरी एम्प्लॉय विल गेट $500 ऑफ फ्री एड क्रेडिट्स। सो Nice. 500 भी नहीं, 1500 था। तो हमने 3-4 फेसबुक के जो भी अपने फ्रेंड्स थे उनको उठा लिया, उनसे लेने लगे महीने का। तो 35-40,000 रुपीज स्पेंड करते थे मंथ का, यूजिंग देयर ऐप क्रेडिट्स, एड क्रेडिट्स, एंड उससे बढ़िया इंस्टॉल आते थे। तो ये अच्छा अभी लगा भी ऐसा ही मतलब। है क्या? Yeah. नहीं नहीं नहीं, वो Good 4-5 good महीनों में tips. चेंज हो गया। एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था, ऐड कहाँ डालना है कौन है फेसबुक में हमारा दोस्त। अब नहीं है, अब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अच्छा 4 महीनों में बंद, 4-5 महीने था फिर बंद हो गया था। तो या नहीं, अच्छा but अच्छा। even दैट। this is insightful, right? Because essentially आप जो कर रहे थे, that was basically finding the product market fit. You were exploring different like avenues that you had access to figure out where it is that your target audience goes to, यस right? And then यस you're bridging the gap using that forum to connect them with यस them. I यस। think this will be helpful for people who might be looking, to our listeners who might be wondering about their own करेक्ट। businesses also. पहले तो पता होना चाहिए कहाँ पे आपकी ऑडियंस है, तभी बनाना शुरू करो। वो आंसर Hmm. तो होना ही होना चाहिए माइंड में, नहीं तो बहुत Right, डिफिकल्ट है जर्नी। right. जैसे And लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम बिल्डिंग फॉर डेवलपर्स, hmm. डेवलपर्स कहाँ मिलेंगे मुझे पता ही नहीं है, तो फिर तो आपका आधा टाइम उसी में चला जाएगा। So दो Makes चीजें तो sense. like the takeaway, what I take away from this is if you're planning to start something of your own, the two things that is should be definitely crystal clear is one thing, that you should have a mission. You're trying to solve a problem rather than like solving a problem should be a goal rather than other things, the other aspects of it. And the other thing is also that you should know your target audience. Is that एब्सोल्युटली। fair? Yeah. या एब्सोल्युटली। Yeah. I Good. think basically to add to that also, वो जो problem है उस वो justified है in the sense that there are a large number of people who face that problem, और वो problem हमारे दिमाग में ही नहीं है, right? So you had these Facebook groups where you had other people who were also having the same issue, and they were essentially looking for a product, but they were या just not, they were indirectly giving you that message that hey, this is what we're looking for. या इवन वहां पे भी एक ट्रिकी पार्ट था। सो वी स्टार्टेड पोस्टिंग बिकाई एज स्टार्ट योर ऑनलाइन स्टोर, योर इज द लिंक, फ्री ऐप एक्सेट्रा। कोई ट्रैक्शन नहीं था। देन आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा कजन बैठा हुआ था मेरे साथ, वो तब 6 स्टैंडर्ड में होगा। उसने बोला दीदी आप ये क्या डाल रहे हो, आप ये लिखो ना कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स ऑन व्हाट्सएप तो यूज दिस Right. ऐप, क्योंकि उनके दिमाग। मैं सोचा वाह यार, मतलब देखो इसका दिमाग कैसा चल Yeah. रहा है। एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर पहला पोस्ट ही जो मैंने डाला था उसमें Hmm. मैं ऐसे लिखा था, इफ यू वांट टू सेल ऑन व्हाट्सएप इंस्टॉल दिस ऐप, नहीं कमेंट यस। So everyone, like there were 400-500 comments. Yes, yes, yes. I used to comment, check your DM, because मुझे वहां पे नहीं डालनी थी लिंक Right. की कमेंट स्टॉप हो जाए। So yes, 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 yes आता था, and then and ऐसे हजारों ग्रुप्स थे, एक ग्रुप में तमाशा कर दिया हो गया, अब Hmm. दूसरा ग्रुप ज्वाइन करते थे, वहां पे ऐसा करते थे। So it started working out really well. Sell on WhatsApp, increase your sales on WhatsApp. Basically, the Amazing. connect, right? The connect with the pain point, Yeah, rather than what you're solving. Understand yeah, what is the exact pain point that they. yeah, So yeah. I'm just wondering ना, तो basically आपको ये connect directly मिल गया, maybe because of the background, or did you have to do like some sort of search to, or it was like it happened pretty fast? Because ये जो journey है to, Nice. ये जो जर्नी है यूजुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मेनी कंपनीज टू फिगर आउट कि ऑडियंस कहाँ रहता है, क्या ये एक्चुअली पेन पॉइंट है,
is it a big enough pain point for me to bring in a solution? There's so many questions, 200 questions which had to be answered, but you had like you said, a ton of yeses that came. So Yeah. did that happen fairly quickly या फिर हाँ, जल्दी हुआ था, जल्दी. So March में we started to think कि we should build 2019 March में, and by April 1st the app was launched, and काफी मतलब 1000 installs तो first 1.5 months में आ चुके थे organically. Fast हुआ था awesome. काफी. Actually हमने नहीं Hmm. बनाया होता अगर हमें वो instinct नहीं आता ना कि Facebook ग्रुप में सब हो रहा है, हम कुछ कर Hmm. सकते हैं. तो So कहीं ना actually, कहीं. this is something जो I'm curious about it. जैसे one thing is आप जब growth कर रहे हो, like there is a strategy to grow. What are some suggestions for metrics, like to know that you're on the right track, that you're being successful, right? Is there some learnings from that phase? सो यार इसका ना सबसे इजी, इसका कोई आंसर है नहीं, बिकॉज इनिशियल डेज में आप प्रॉफिटेबल तो हो नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग सो मच और R&D, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट ही, आप एक इंजीनियर भी हायर करो तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं. तो इनिशियली तो आप प्रॉफिटेबल होगे नहीं, तो इफ यू आर ऑन राइट ट्रैक आप कैसे ही गेस कर पाओगे. सेकेंड थिंग, लोग बोलते हैं कि रेवेन्यू मंथ ओवर मंथ ग्रो हो, वो तो होगा ही यार, मतलब इतना कम रेवेन्यू है तो ऑब्वियसली मंथ ओवर मंथ ग्रो होगा ही. But the only, I think metric which can guide you if you are doing right or not is, are you being satisfied? अगर आपको नींद आ रही है रात को, इसका मतलब you are on right track. अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप satisfied नहीं हो कि ये क्या चल रहा है, बकचोदी चल रही है, ये सब मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे पता ही नहीं कल क्या करना है, मैं सुबह उठ के सोचूंगा, then probably there is something wrong. I think that should be the metric in early days. बाकी सब तो यार मतलब रेवेन्यू से कैसे मेजर करोगे अर्ली डेज में. Cold that start is test, like right? that is the quirkiest thing I've heard, yes, it's such an indirect way of thinking. थोड़ा सा काफी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि अगर नींद आ रही है एंड यू नो एग्जैक्टली कल क्या करना है, इट्स नॉट लाइक जस्ट रैंडम स्टफ, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. मुझे तो बहुत मस्त Clarity नींद आ रही है basically. आजकल. तुम्हें clarity. क्लैरिटी. हाँ. Yeah. This is nice. This is nice. I love Actually, it. I love it. yeah. Actually, I love it. And actually जो सेकंड क्वेश्चन मैं पूछने वाला था आपने थोड़ा सा आंसर कर दिया, बट आई वाज गोइंग टू टच अपॉन दिस कि इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, राइट, पर जब आपका प्रोडक्ट है एंड यू हैव आइडेंटिफाइड द टारगेट ऑडियंस, लाइक सम एवेन्यू वेयर यू कैन सेल इट, you Yeah. have a product built also, an MVP built, but then how did you decide the pricing of it? And because that is one thing which many people, especially if it's a new problem that they're trying to solve, right, they would not know about this. So how did you get those Yeah. insights? ये भी इजी था काफी. इफ यू हैव कस्टमर्स, सो कस्टमर स्टार्टेड कॉलिंग अस आस्किंग कि आप कस्टम डोमेन, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन स्टोर बिल्डर, सो दे स्टार्टेड आस्किंग आप कस्टम डोमेन कनेक्ट करते हो क्या, करके दोगे क्या, एक्सेट्रा. हमने बोला हम करते तो नहीं है बट कर देंगे. सो कॉल आया था कस्टमर सपोर्ट में. सो आई वेंट बैक टू आशु के, ऐसा ऐसा कॉल आया. तो आशु सेड कि यार अभी तो है नहीं सोनाक्षी, अभी मना कर दे फालतू, फिर अपन पहले बना लेंगे फिर करेंगे. बोला नहीं, इट शुड बी द अदर वे अराउंड, लेट्स कमिट टू हिम, इवन इफ इट मीन्स हम एक हफ्ते बाद का टाइम देते हैं, एंड देन वी विल बिल्ड इट. सो वो कस्टमर मुझे आज तक याद है, वी टोल्ड हिम ठीक है हम आपको नेक्स्ट ट्यूसडे तक डिलीवर कर देंगे, बट उसके पैसे लगेंगे, वो फ्री में नहीं आएगा, अभी तक आप फ्री में है. तो बोला हाँ ठीक है फाइन. तो मैंने बोला 499 रुपीज लगेगा, ऐसे ही मतलब दिमाग से कुछ निकाल के. सो ही सेड 499 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, एक्चुअली मेरे को 2 वेबसाइट में कनेक्ट करवाना है, तो मैं टोटल 250 रुपीज दे दूंगा आपको 2 के. तो मैंने बोला नहीं देखो, मतलब 2 ले रहे हो तो 499, एक है तो मैं 250 में कर दूंगी. तो बोला ठीक है एक से शुरू करते हैं. सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टूड कि जो पहला प्लान है वो 250 के आसपास आना चाहिए. सो हमने 199 रुपीज का लॉन्च किया पहला प्लान, छोटा सा, एंड उसका ईयरली वर्जन 1999 पे लॉन्च किया. तो वही कस्टमर से पूछो समझो तो निकल जाता है. कॉम्पिटिटर्स है तो और इजी हो जाता है, एंड यू नो टेक Because देम एज you already बेस. have data points, या correct? या तब हमारे पास I'm नहीं था तो खुद लगाया. I'm kind of wondering कि this might not have been the only customer feedback you would have received, है ना, बहुत सारे आते हैं. तो how do you know which ones to act on and which ones to not act on? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट गलत कस्टमर के ऊपर बनाते हो एंड यू नो दैट्स नॉट इनफ पीपल मे बी वांट दैट, या फिर प्राइसिंग बहुत गलत हो जाता है उसके कारण, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस, देन यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड बाय द टाइम यू बैक ट्रैक, यू नो, काइंड ऑफ
Yeah, you're pushed that back. happens a lot. In fact, that I think is the major reason of any startup dying in their journey. Building for wrong people, wrong set of people. यहाँ पर यार ऐसा होता है कि शुरू में तो इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा काम करते हैं. आपको जैसे आप 10 कॉल ले रहे हो दिन के, 20 कॉल ले रहे हो, तो आपको लग रहा है यार ऊपर ऊपर से ना यही मोटा मोटा सबकी डिमांड है. या मान लो ये 4 लोग की डिमांड है, पर मुझे पता है मैं 6 से लोगों को ये चीज बताऊंगी तो वो भी खरीद लेंगे. वो बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनकी थिंकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, बट मैं उनको बताऊंगी तो ले लेंगे. तो इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव इन द बिगनिंग. इट्स अबाउट हाउ यू आर गेजिंग देयर. आप उनको मुंह पे जाके नहीं पूछ सकते हो ये मेरा क्वेश्चनर है, इसका Right. आंसर दो. वो हम्म. नहीं होता है. एंड आई It हैव doesn't work. सीन प्रोडक्ट मैनेजर यही करते हैं, एंड दैट इज समथिंग आई रियली हेट. आप कस्टमर से कैसे पूछ सकते हो उसको क्या चाहिए? वो थोड़ी ना मतलब They'll not be विजन able. सेलिंग Right. करने आए हैं आपको. तो Right. यू हैव टू जस्ट स्पीक विद देम, अंडरस्टैंड थॉट प्रोसेसेस एंड एग्जीक्यूट. Basically speak the Right. customer's language, right? This is also something which यस. is quirky, that instead of having a structured questionnaire and just saying, hey, I या. want this info, have that यस. person connect and या. then दूर दूर तक मुझे तो एक याद है, understand. एक कस्टमर ने ऐसे गप्पे मारे थे. नेक्स्ट डे वही वाईसी इंटरव्यू था, बट वो रात को Hmm. 1 बजे गप्पे मार रहा है फोन पे कि एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ ना, एक ना नया आइडिया आया है कि फार्म्स को हम रेंट पे लेते हैं, मतलब Hmm. जमीन को हम रेंट पे लेते हैं, उसको फार्म हाउस की तरह बनाते हैं, एंड दैट वी सेल एज अ सर्विस टू यंग पीपल. वो मेरे से ये गप्पे मार रहा है रात को फोन पे. मैं भी लाइक आई एम ऑल्सो एब्सॉर्बिंग ऑल दीज थिंग्स, Yes. ऑल्दो ये दिस इज Right. नोवेयर रिलेटेड टू बिकाई. बट वो करना पड़ता था. करना पड़ता है. Yeah, these are And the things, right? Like these are the choti choti cheezein jo behind the scenes ho rahi hai, which many of yeah, these articles that are glorifying your growth, they'll not touch upon they'll these not touch. things. Yeah, Yeah, this is they don't even understand. This is something that only an entrepreneur can understand, no one else. And this is what gives you that peaceful sleep. कि यार Hmm. मैंने इतना कुछ सीख लिया, मुझे थोड़ा ना कल ये सब आता था, आज आता है मेरे को ये सब. It is which I wanted to discuss, right? Because in terms of Bikai, like because this was directed towards people who are like essentially people who don't have an online presence, and the majority of your customers would Yeah, probably be small business owners, right? yeah, So and if so, I would expect that the distribution of, like, for instance, language would be one thing, right? Pivot that you would have to consider, because सब yeah. जैसे हो सकता है कि they might not be speaking in English, or they Hmm. might be speaking in some other regional language. They might not be comfortable with कोई मतलब जैसे एक ऐप बना दिया या वेबसाइट, even the concept of a website, right? Before, so Yeah. was there some Proper. thought into that? Yeah, मतलब कि vernacular के हिसाब से maybe we should make it multilingual, maybe we should, the communication channel has to be different, something like that. या. सो काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा, वीसीज बहुत पूछते थे. बट Hmm. लाइक वन थिंग दैट वी अंडरस्टूड वाज इन टर्म्स ऑफ द सर्विस दैट वी गिव, इट शुड बी दो चीज आपको मेक श्योर करनी है. एक तो नॉर्थ इंडियंस एंड एक साउथ इंडियंस को आपको केटर करना है. बाकी सारी लैंग्वेज इधर उधर मैनेज करके चल जाती है. सो वी हायर्ड वन पर्सन जो तेलुगु समझता था, तमिल समझता था, कन्नड़ समझता था, वन पर्सन जो हिंदी समझता था. Hmm. बस मतलब अब हमको पता था कि इससे हम मैक्सिमम इंडिया कवर कर रहे हैं. उसके अलावा जो एडिशनल है, मराठी, बंगाली एक्सेट्रा, वो ऐप की लैंग्वेजेस डेफिनेटली, एंड दोज आर इजी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, लोकलाइजेशन. बट जो सर्विस होती थी उसको सॉल्व करना एक डिफिकल्ट पार्ट था, वेयर वी थॉट कि बड़ा सबसेट ले लेते हैं Hmm. थ्रू दीज लैंग्वेजेस एंड वील कवर दैट अप. सो बस उतना ही था, बाकी उतना कोई बड़ा मेजर इशू है नहीं इंडिया में. लॉट ऑफ पीपल नो हिंदी अब, इंग्लिश भी समझ जाते हैं अब तो. सो नॉट Hmm. नॉट क्वाइट अ लॉट. साउथ में देयर वर स्पेशल रिक्वेस्ट की हमें तेलुगु एग्जीक्यूटिव दो, हमें कन्नड़ एग्जीक्यूटिव दो. सो वो भी हमारे पास होता था बिकॉज वी वर बेस्ड इन हैदराबाद. तो पहली हायरिंग तो वैसी ही हुई थी. सो या. Yeah, that to Also, be I honest. think that हो सकता है कि a lot of people want to get on to want to build this image that we converse in English and we want to, we are building something which is a little bit more global and not just local. तो उस हिसाब से शायद maybe there's some traction that you might have received in terms of that as well, I presume. I Yeah, don't Hmm. know. probably, but overall, because जो प्रोडक्ट्स अपलोड होते हैं बिकाई में, दोज आर एनीवन कैन अपलोड इन देयर ओन लैंग्वेज. सो इन द एंड इट वाज more dependent on what kind of content those people
are uploading. So yeah, it was a kind of The one platform which thing was, yeah. the one thing which I found notable ना जब हम बात कर रहे थे was this approach to problem solving itself, and that can translate to other things. That the language was a problem, but then you approached it in the way of like, instead of going thinking too deep into it, divide it into bigger problems, right? Smaller. There's just like north and south. You divide into that and you attack them instead of going behind each small problem individually. I think that approach is a very nice approach to follow for problem solving in general, right? That you Yeah. address the biggest like chunks, and then you once you solve them to a relative extent, go deeper again.